So there is a two phase of the data modeling. First is the data preparing. Data inside of the data preparing, what we do. So first, in the first part, what we do, how the data is prepared, data is how the construct the data each individual component, and in second part we use the coding part in which we implementing the coding or section of that. So let's with mongoose से start करेंगे. Data modeling, इसमें अपन only we see the how the data is model, and we don't see the how the connectivity between the database and the express. We only see that the how data modeling is happening here. The something with experiment we have to the experiments. First we sir has taught us that if in any company, there is a data is given to user, fresher and the experienced person. The experienced person ask about the data, and the fresher get implemented there. The experience first understand the what data is stored, what kind of the data is stored. Then username है क्या, पासवर्ड क्या है, ईमेल क्या है, ये सारी चीज़ों को जो एक्सपीरियंस बंदा है इसको सबको पूछेगा. दे डोंट गो इन द फर्स्ट टाइम ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डायरेक्ट टू इट दैट. इट इज़ नॉट डू दैट थिंग्स. सो फर्स्टली ही ऑब्जर्व द एवरीथिंग, आफ्टर देन दे ही इम्प्लीमेंट है. तो टूल्स हम जो यूज़ करेंगे, टूल्स फॉर द कनेक्टिविटी के लिए, वो क्या करेंगे, मोंगूस करेंगे. तो मोंगूस की वेबसाइट है, मोंगूस के जाके मंगूस का टूल्स, मंगूस डेटाबेस नहीं, मंगूस की वेबसाइट है. ठीक, मंगूस का टूल यूज़ करेंगे. ये इसके टूल्स होंगे यहाँ. तो सीधे इम्प्लीमेंटेशन लिखा है कि हाउ डू दैट, बट we don't go on the depth. We don't lead the database connectivity. हम द फ्रेशर भी क्या डेटा स्टोर करेंगे और कैसे स्टोर करेंगे, वी अंडरस्टैंड द फर्स्ट. तो डेटा मॉडलिंग हम देखेंगे. तो टूल्स कौन कौन से यूज़ करेंगे. तो फर्स्ट kind of the tools is the moon model. Moon model is a kind of the tool which is used for the moon modeling. Moon मॉडल मेन मॉडल एक वेबसाइट है. इसमें क्या होता है, एक स्कीमा बनता है कि दे अंडरस्टैंड द व्हाट काइंड ऑफ द डेटा स्टोर एंड द व्हाट काइंड ऑफ इन मून मॉडल modeler. They have the special kind of the things. For example, they give the our database and code direct through the simple part of that in the in the moon model. एंड सेकंड टूल देखो, मून मॉडल का ये टूल है. ठीक, इट ऑटोमेटिकली जनरेट कर देता है मोंगो डेटाबेस का कोड जनरेट कर देता है बाय द स्ट्रक्चर डिफाइन करके. सो बट ये मून मॉडलर आर द वेरी एक्सपेंसिव, एंड दैट्स व्हाई वी कैन यूज दिस. we use the eraser.io. eraser.io क्या करता है, ये क्या करता है, इसको ये हमें डेटा मॉडलिंग के लिए काम आता है. फॉर एग्जांपल, ट्राई टू इरेजर रिमूव इट, एंड वी ट्राई टू इरेजर. maybe I use in not in this phase, but leave it. eraser.io, inside that I go here. Because I already log in it, that's why I'm looking at it. Inside that I use the creating the blank page. Inside that there is a three section: documentation, both Canva. The documentation is kind of the this section, and Canva is for the diagram, and this is both the section. I have to draw the use the Canva. So I select the Canva. Inside of the Canva there is a diagram as a code. So if you click on it, they have the entity relationship code. Entity relationship, they automatically generated the entity relation, and corresponding that they give the
code section. They have the, this is not a MongoDB code, but it kind of that thing. But Moonlighter give the exact code like the MongoDB has given required. So how we design the things inside of the so look at this, move it, it is the so leave it. I have we do the some another diagram, another diagram kind of the diagram is what the diagram in that diagram, see the ये एरर्स डॉट समझ गया कि यहाँ से 3 सेक्शन होते हैं, डॉक्यूमेंट बूथ और कैनवा। कैनवा को जब हम यहाँ क्या करते हैं, कॉप एंड क्लोज से डिलीट करते हैं, तो यहाँ पे हमें शो होने लगता है कि व्हाट काइंड ऑफ द कोड है जनरेटेड। सपोज वी वांट टू क्रिएट रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्रिएट करना चाहते हैं, तो वी गो टू द eraser.io and inside of that we there is a small text for the text td, if you click on the for example I have to draw the rectangle, so let's click on R and I draw the rectangle. After that I have to write the something, so I click on the T and I use here registration, maybe it correct language, and in the registration form they what are the things are there. So let's name age and what one thing is also remaining, the username, email, password, username, username, uh, email or password, this kind of password, this kind of the thing are the after that we use the another kind of the thing, register, submit. So these are the things are the developed like that, and after that you have trace that कि ये क्या बन गया, ये अलग अलग रजिस्ट्रेशन पेज के फील्ड बन गए कि व्हाट आर द फील्ड आर द रिक्वायर्ड। सो पहले ये देखें विच स्क्रीन इज़ द फर्स्ट लॉगिन, हम ये डाउट आता है कि पहले कौन सी स्क्रीन बनाए, कि लॉगिन पेज स्क्रीन बनाए कि रजिस्ट्रेशन बनाए। तो फर्स्ट यूज़ है उस स्क्रीन को सिलेक्ट करो जिसमें डेटा का स्टोरेज कराना है। दैट मीन्स फर्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन के लिंक बनाएंगे, रजिस्ट्रेशन पेज बनाएंगे इंस्टेड ऑफ दैट कि लॉगिन का हो, क्योंकि लॉगिन इज जस्ट काइंड ऑफ द वैलिडेशन ऑफ द डेटा, जो डेटा स्टोर करेंगे उसी को वैलिडेट करने का काम करता है लॉगिन। ठीक, जैसे यहाँ पे 3 फील्ड हो गए, यूज़र नेम, ईमेल और पासवर्ड, और रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। ठीक, इफ एनी फील्ड इज एक्स्ट्रा, अगर कोई और फील्ड आ जाती है और कंप्लीट लॉजिकल तो क्या होगा, कंप्लीट लॉजिक चेंज हो जाएगा, कंप्लीट स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। मतलब अगर कोई एक और फील्ड आ गई, फॉर एग्जांपल फोटो आ गया यहाँ पे, तो ये क्या है, हियर फोटो इज एक्स्ट्रा फील्ड चेंजेस द लॉजिक, ये क्या करेगा, लॉजिक को चेंज कर देगा, बिहाइंड इट इसके पीछे के लॉजिक को चेंज कर देगा। हाउ इट डू, आई हैव नो knowledge, but it can be changed. Even there is a DOB, date of birth is also, even DOB can be changed the field of the logics. So I already mentioned that the registration form is made first because they have to data store, and logic login form is the just kind of the validation of the data. Don't take any extra data from the logic, they have to validate the data. So don't go for the first time of the logical, they have to go for the registration. Take, and how the data is stored and manage this all to do the subdo list, we can do to do list create करेंगे with subdo list। तो it kinds of the registration form and login form, inside that the to do lab create करेंगे, तो उनके अंदर 3 सब डू क्रिएट करेंगे कि यूट्यूब में क्या अपलोड करना है, जॉब में क्या चल रहा है, जिम में क्या कर रहा है, दिस ऑल द काइंड ऑफ थिंग सब डू सब टू डू के अंदर क्या होगा, इसके अंदर भी कंटेंट मार्क एज डन क्रिएटिंग कब की है वो सारी चीज़ें, और सब इसके टू डू लिस्ट के अंदर टाइटल, कलर और क्रिएट कलर, यूज़र और सब
टू डूज क्या है उनको एरे में रखे, जैसे एक हो गया, एक क्या हो गया ऑब्जेक्ट की यूट्यूब, तो उसको एक ऑब्जेक्ट में रखे, जॉब्स को रखे, जिम को रखे, किड, दिस ऑल ऑब्जेक्ट मॉडलिंग, इसे हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट मॉडलिंग कहते हैं। डेटा स्टोर करेंगे, ठीक। देन रिट्रीविंग एंड वैलिडेशन इज द लास्ट थिंग, और उसको रिट्रीव करना और वैलिडेट करना यह दूसरी चीज़ होगा। हियर विच आर यूज हियर विच इज़ यूज द स्टोरिंग ऑफ द डेटा, हम क्या यूज़ करेंगे, जो डेटा है उसको स्टोर करने के लिए, या तो पेरिस्मा पारिस्मा एंड मोंगोस मोंगूस, ये दोनों चीज़ें यूज़ करेंगे, प्रिज्मा या मोंगूस का यूज़ करेंगे, ठीक। तो फर्स्ट फेज में अपन समझ गए कि डेटा मॉडलिंग और डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग इरेजर के थ्रू कैसे बन सकते हैं, मून लाइट कैसे काम करता है, दिस ऑल द थिंग्स आर द अंडरस्टैंडेबल, ऑल द देयर इज स्मॉल थिंग्स आर द रिटन इनसाइड ऑफ दैट, यू यूज दैट, ठीक। तो उसको यूज़ कर सकते हैं अपन,